Hello, Miss. Good afternoon. झगड़ा के लिए उधर गई तो उधर ही बड़ा अरे वो दोनों गाड़ी ना आते थे तो मेरा ड्राइवर तो मुंबई पर खड़ा था मारा मारी करता था ना तो धक्का मार लगा तो मोटर ऊपर they contaminate food. मासी मोटर ये जो है वो ये महीना बाद उसी की कमी जो है वो आया मारी तो मारी अंदर चालू तो छोटा ही जाए में 5-10 करके Mama, नहीं रहने दे.
बोलो। हाँ, किसने नहीं किया है तो क्लास टीचर से बात करो। कौन सा डिवीजन है? कौन कौन सा? जी फॉर गर्ल। जी फॉर गर्ल वाला जी ना? हाँ। Yes, ma'am. Pooja, miss, are you there? Okay, I think now you all can hear. I have connected myself with mobile phone also. Yes, ma'am. Your voice is coming. You're audible. Okay, no, actually I have connected laptop से mobile वो connect नहीं हो रहा है audio शायद. Okay. Okay, Okay. You continue, ma'am. okay, ma'am. Thank you so much. Okay, good afternoon, everybody. Welcome to 11th standard. Good afternoon, teacher. Okay, this is your first psychology class. And somebody have just messaged me about the syllabus. Syllabus is already given to you all, I think, but again, I'm going to tell you, only first chapter will come, that is the story of psychology for this unit test. Okay, only one chapter we are going to take, that is story of psychology. Is that clear? Okay. Yes, teacher. Before starting with my class, I want to tell you one simple thing. I am going to give you markings in between. Okay, you have to mark those in your textbook, and nobody will ask about marking afterwards, because afterwards I'm not going to give you any markings. You have to do it in class right now in this 1 hour, 2 hours. Okay, is that clear? Yes, Hey. miss. Yes, miss. Okay, fine. So this is your first chapter, story of psychology. First, we need to understand what is psychology. Can anyone tell me? I will ask question to Mahima Jadhav. Mahima, are you there in the class? Mahima. Mahima, Yes, Mahima, can you tell me, according to you, what is psychology? You all have something in your mind. What is psychology subject? Just tell me in your own words. Come on fast, Mahima. What is psychology? Psychology क्या होता है? This is just a general question. You have to tell me in your own words. आपको अपने language में बताना है कि आप psychology के बारे में क्या सोचते हो. What is your thinking about the psychology? Science of mind behavior. Farhan, I didn't ask the question to you. I asked question to Mahima. So Mahima only will answer me. Come on, Mahima. Miss, it is related to our brain. Related to our brain. Okay, fine. Sania Ansari have raised the hand. Sania, you tell me. मिस साइकोलॉजी को अर्लियर में बताया गया था कि मतलब वो जो साइको सोल और साइंस के रिलेटेड कुछ होता है. नहीं, wrong. Okay, Farhan, आप ही दो आंसर बेटा. You only give answer. Yes, my study of human behavior and its Yes. and is This is not a study related of to mind. science brain. This is not a study of कि जो इंसान के दिमाग में चल रहा है वो मुझे समझ में आ जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. This is a subject to study human behavior according to certain situation. हर एक सिचुएशन में एक इंसान का बिहेवियर कैसा होता है
उस चीज को समझने का एक सब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी. साइकोलॉजी is overall just an understanding of behavior of humankind. But we have many psychologists who have done lots of research on animals also. They also studied the behavior of animals. Okay? So according to their behavior, they tried to form some theories for us to study, that how to understand the behavior of a humankind. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अभी I have 114 participants, 114 लोग हैं, सबका बिहेवियर क्या एक सिचुएशन में एक ही जैसा होगा? No, miss. नहीं होगा. होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. नहीं होगा. ओके फाइन. नाउ जिसने भी बोला नहीं होगा, जस्ट टेल मी द आंसर. क्यों नहीं होगा? व्हाई? क्यों आप लोग का बिहेवियर एक जैसा नहीं होगा? कम ऑन. की थिंकिंग एंड बिहेविंग अलग अलग होता है. हाँ, सबका थिंकिंग अलग अलग होता है, सबका रिएक्शन अलग अलग होता है, सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है, सबकी सोच अलग अलग होती है, सबकी अपब्रिंगिंग भी अलग अलग होती है. Upbringing plays a very important role in our psychological factor. Students, remember this. हमारी upbringing कैसी हुई है from childhood, that also decides our psychology, our thinking process, our behavior system. Okay? Now, story of psychology. Students, psychology are derived from the Greek word. Remember this. This I'm going to ask in the exam. Psychology derived from the two Greek words, that is psycho, psyche and logos. दो वर्ड से निकाला गया है. That is also from the Greek. ये ग्रीक लोगों का कॉन्सेप्ट है. हमारे यहाँ पे साइकोलॉजी जैसा कुछ था ही नहीं शायद पहले. ये वेस्टर्न कंट्रीज का हमारे इस पे इफेक्ट आया है कि नहीं, आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंटल हेल्थ को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट बेटर एंड बेटर. Okay, आज के टाइम पे everyone is suffering depression, everyone is suffering a mental illness. What is all these things? What is all these things? क्या है ये सब? These are the problems related to our mind, related to our brain, related to our behavior. Okay, and psychology helps us to understand what is the mental illness that person has, why this person is suffering from the depression, क्या problem है. And according to that, psychologist gives the counseling. Now, what is counseling? Anyone can tell me? Helping that particular person to come out from that thing like depression and all. Okay, come out ऐसे तो नहीं आ जाते. Counseling is the session, children. Counseling is what? Session which gives us a proper data कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है. Okay, that is the counseling system. Okay, counseling का मतलब ये नहीं है कि आप लोग पूरी तरह से उससे बाहर ही आ जाओगे. आपको counseling एक छोटा सा help करेगा to remove all those negative points from your brain. That is counseling. And there are other system also which gives us lots of information about the brain system and all everything. Now, we will start with our chapter. Just remove in your textbook, children. So here we are going to study the introduction, which I have given you just now. Then the history of psychology. पहले साइकोलॉजी के बारे में क्या सोचा जाता था, अब साइकोलॉजी को किस तरह से देखा जाता है. Before studying the psychology, we need to understand what was the level of psychology in historical period. Historical period में साइकोलॉजी को फिलोसफी ही समझा जाता था. It is just a philosophy. Okay, philosophy का part था. But after some time, the psychology become the subject of a science. Why this become a subject of a science? Anyone? Philosophy से ये निकल के science में क्यों add कर दिया इसको, psychology को? Who will tell me? Because psychology is related to human behavior. Because psychology is related to human behavior. Okay, तो इसको science में डाल दिया. क्यों ऐसा?
It is very important in psychology is very important in human life. तो सोशियोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है ह्यूमन लाइफ में, जो हमें सोसाइटी के बारे में पढ़ाता है, तो उसको भी जो तो डील करता है वो मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर से करता है, इसीलिए इसको नो रे बाबा नो. You all have taken the science. Science is all about the experimentations. Am I correct? Without Yes. experimentation, आप science understand कर सकते हो क्या? No. So same thing happening in the psychology. Psychology never talks about without experiment. It never talks. It never gives you any theory without experimentation. And in any of the subject, when there is a concept of experimentation, then that subject automatically become what? Science. Getting my point? So there Yes, is teacher. lots of experimentation done in psychology subject. When this experimentation was going on, at that time people realized that this is not just a subject, this is not just a philosophy, this is the science that everyone need to understand. Okay, that is the reason it is converted in from philosophy से इसको निकाल के किस में पार्ट में डाल दिया, साइंस में डाल दिया. Understood till here? Yes, teacher. Yes, miss. Now the study of consciousness, study of unconsciousness, study of behavior, mental processes, scientific method. अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक word आ रहा है scientific method. So whenever there we have a method तो या तो maths में होता है या तो science में होता है. Am I correct? Yes, teacher. Yes, please. So whenever there is a method, so this will become a science. So psychology now become a science. Then we are going to study about what is behavior, study of cognition, then psychology in Indian perspective, goals of psychology. Children, यहाँ पर psychology in Indian perspective इसलिए लिखा गया है because in our society thinking is very different, and in Western countries thinking process is very different. So in Western countries, psychology treated as a very differently as compared to India country. Now, Sonia, are you there in the class? Sonia Goswami? Yes, miss. Just read the first paragraph. And the children, again, I'm going to announce the same thing. Keep marking in between. मैं जहाँ जहाँ पे आपको ऐसे yellow color का दिखाऊंगी, that you all have to mark, and that only will going to come in exam. So आप लोग को exam के लिए मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, because I'm going to ask questions from that markings only. Is that clear? Yes. Ma'am, I don't have the textbook right now, so Then you whatever have you to buy mark, can I write it? or check out a PDF. Yes, ma'am, I'll buy it today, but for now, can I just write whatever you have marked here? I think writing is not possible. In 2 hours, how much you are going to write? So do one thing, take anybody's help and take the markings. आपका आज psychology का था, अभी 25th को आपका exam है, and still you don't have a textbook. Ma'am, मुझे कल ही inform किया गया था that then psychology do as a it. subject. Markings तो मैं दे ही दूंगी. आप लोग दूसरे friends से you can contact. Now, Sonia, just read the first paragraph, beta. Although psychology is new for us in terms of study, we are aware of this subject from our childhood because we have been observing different forms of emotions, behaviors, moods of human beings. Human behavior is full of diversity. This diversity amazes us. When we open daily newspaper or watch news on TV, we see different aspects of human behavior. Some examples. That's it. Now, psychology is very new for us. इसके पहले psychology पढ़ा क्या आप लोगों ने? नहीं पढ़ा. Correct? You all just have a knowledge of some की psychology तो brain समझ लेता है. जो psychologist होता है, वो इस इंसान के दिमाग में ये सारे एक बोलते ना wrong information है about the psychological subject. But what is psychology? Psychology is a very new for us in terms of study. We are aware of this subject from our childhood because we have been observing different forms of emotions. Here, what we are observing in psychology, forms of emotions, behavior, mood of human being. Okay, and human behavior is
full of diversity. जैसे मैंने अभी आपसे just एक question पूछा that we have 114 children in the class right now and 114 have a different personality, different behavior, different mood, different nature. So they all will behave differently in a one situation. Okay? So now just mark this 2 lines. So we have been observing forms of emotions, behavior, moods of human beings. Human behavior is full of diversity. Okay? See, now some examples are given here. Newspapers. Can you observe in the picture newspapers? Yes, miss. Yes, Yes, miss. So you can just, I will ask Himanshi. Himanshi, just read the headlines here in newspapers. Read the headlines. Student decided suicided due to failure in exam. Okay, so this is the failure in exam because the child was not able to compensate with the failure. वो failure के साथ compensate नहीं कर पाया. So what he decided to suicide. Whether अगर दूसरा बच्चा होता, चलो ठीक है, एक बार फेल हो गए तो क्या हो गया, next time exam देंगे. Because nothing is precious than life. So उसका thinking process क्या था? I will kill myself. दूसरे बच्चे ने क्या सोचा? नहीं, life is very precious. I will try again. Okay? Now, read the next heading. Read the next heading, beta. Miss, ma'am. Wife donates her own kidney to her husband. Okay. Wife donates her own kidney to her husband. So here I can understand the emotions of kindness, emotions of love for her husband. Yes. Now, next. Arunima Sinha, who lost her both legs in an accident, climbed Everest. Arunima Sinha, who lost her both legs in accident, climbed the Everest. So what you can observe here? What you can observe with this headline? That she has that spirit in herself that she is gonna do that thing. She trained her brain कि चलो मेरे पास legs नहीं है तो क्या हो गया? My life is not stopped here. I'm not going to stop here. And what she did? She climbed the Everest. Now next one. Himanshi, read the next one. Spontaneous blood donation by youth for passenger injured in bus accident. Yes, situation of kindness in that youth. Next one. Himanshi. Yes, ma'am. Officer arrested for taking beard ₹50,000. Yes. So through these headlines, we can understand the different aspects of human behavior in different situations. Am I correct? Yes. ये heading से हमको क्या पता चल रहा है? ये heading से we can understand that different people have a different behavior in different situations. Okay? Now, so now, here this is the one activity. Sania Ansari, Sania. Yes, miss. What type of emotions of human nature is expressed through above news? जितने भी news अभी तक हमने पढ़े, what kind of emotions you can understand here? Spontaneous blood donation. Different type of like that they are giving 50 for to her husband. Dekho, I'm talking about human nature. So in human nature, you can say here, you can observe the kindness,
Yes. Here Ma'am, you can helping nature. observe the commitment. Humanity. Commitment Greed. of wife towards his husband. Yes, commitment. Then you can also say the greediness of that officer who is taking bribe. Am I correct? So these are what? These are the human nature which is expressed. Okay. Now we are going to study history of psychology. Just mark this yellow part. Mark this yellow part. Mark first, then I'll make you understand this. Mark first. Finished? Yes, Miss, done. Okay, fine. You can see two pictures, Plato and John Locke. They are responsible that you all have psychology in 11th standard. Okay? They are responsible. They have given the very real, what is the psychology? They started this psychology as a very, that psychology is a very important part of human life. So they've given this type of concept to us. Now, psychology is what? Psychology is a very vast field. Why this is vast field? Because human nature is a very different. हर एक human का nature अलग-अलग है. तो हर एक का nature हम पढ़ने जाएंगे. So of course, automatically psychology will become one vast field of study. Because here we are studying what? Here we are studying the nature. And each person have a different nature. Different concept of nature. हर एक के पास अपना खुद का nature है, अपनी खुद की personality है, अपना खुद का way of behavior है. So that is the reason when we are going to study behavior of a man, behavior of a people, so automatically psychology will become a vast field to study the behavior aspect of mankind. Okay? And here I want to give you one statement that psychology did not emerge directly as a science. ये directly science में इसको include नहीं किया गया. Earlier it was branch of philosophy. Just now I just told you this, no? Psychology was considered as what? This is a philosophy. ये तो philosophy है. But when this psychologists started the experimentation, after the 19th century, then people thought that कि नहीं, इस subject में तो method है. In this subject we have experimentation. So this subject should be included in science. Understood? Yes, Just mark this all this yellow part. Yes, Miss, understood. Okay, Rutuja Shinde. Yes, ma'am. Rutuja Shinde. Yes, ma'am. Rutuja, are you there in the class? Yes. Rutuja, your voice is very low. Shubham Pal. Shubham, are you there in the class? Shubham? Yes, ma'am. Shubham, just read this paragraphs. Ma'am, All three paragraphs. okay, ma'am. 1.2 The history of psychology. Psychology is a vast Please be loud, Shubham. Psychology is a vast field studying कहने दो behavior. शुभम, आपकी आवाज मुझे ही नहीं आ रही है. खुशी वोरा. Miss Mary. खुशी. Yes, ma'am. Khushi, are you there in the class? Yes, ma'am. Hello, am I audible? Hello. Ma'am, can I? Khushi is not interested in studying. Okay, Shreya Nayak. Ma'am, I'm here. Shreya, come on, start reading. मैम मेरे ख्याल से आपके यहाँ से कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है. इन लोग की आवाज आ रही है क्लियर. Ma'am, you had some audio issue.
Ma'am, Is the vast field studying I don't know behavior. why your voice is very low. ma'am, you have audio problem. Okay, leave it. I'm not going to waste my time. Ma'am, can I read? Okay, so children, psychology did not emerge directly as a science. It started as a branch of philosophy. It evolved as a separate branch in 19th century. So you all have to remember this philosophy and 19th century for the filling the blank. Now, Plato believed that knowledge is innate, whereas John Locke thought that each child is born as a empty slate and that knowledge is primarily acquired through learning and experience. प्लेटो ने क्या बोला कि नॉलेज हमारे अंदर ही होता है, नॉलेज इज इनसाइड अस. बट जॉन लॉक ने क्या बोला? व्हाट जॉन लॉक सेड? जॉन लॉक ने क्या बोला? जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग पूरा खाली होता है, पूरा खाली होता है उसका दिमाग. उसका दिमाग पूरा खाली होता है और हम जैसा सिखाते हैं वो बच्चा वैसा वैसा सीखने लगता है थ्रू द लर्निंग एंड एक्सपीरियंस. सो दिस वाज स्टेटमेंट गिवन बाय जॉन लॉक. नाउ साइंस ऑफ सोल, नेक्स्ट हेडिंग. First, here we need to understand how we defined psychology. The first attempt, Ritik Rawal. Yes, miss. Somebody is sitting with you. You are not alone. What happened? Sir, my father. What? Sir, my father. Huh? Father, sir, my. Then sit alone, na beta. Yeah. Chalo, koi nahi. Sir. Thank you, miss. Sit. Okay. So now, the first attempt to define psychology was made on the basis of terminology used. The word psychology derived from two Greek words, psyche and logos. Remember these two Greek words, psyche and logos. Psyche means soul or mind and logos means science. So branch of knowledge. So thus psychology is the science or branch of knowledge that deals with our soul or mind. Okay? जो हमारे soul और mind से deal करता है, that is subject psychology. Have you all marked? Say yes or no? Yes, miss. Okay, students, 1 second. मुझे थोड़ा voice नहीं आ रहा है. I'll just get out of the class and will come again. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Now you all can hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, that is better. Now, symbol of psychology, you can see this. Do you know symbol of psychology? See this. So this is the symbol of psychology. आप किसी भी psychology के book में देखोगे, this symbol you can observe. The symbol of psychology is 23rd Greek alphabet, PSI, means soul or mind. Okay? So, but later psychologists were not satisfied this definition. अब ये जो प्लेटो और जॉन लॉक ने जो डेफिनेशन दिया, जो और साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे इमर्ज हुए, they were not satisfied with the Plato and John Locke's statements. Okay, so what they did? Soul was difficult to study. It could be neither be visualized nor could be described in concrete terms. हम लोग इसमें थोड़ा माइथोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी भी ला सकते हैं. आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता है, आत्मा को कोई देख नहीं सकता, आत्मा को कोई छू नहीं सकता है. So this was given by the other psychologist. So उन्होंने क्या कहा कि soul cannot be studied, soul को हम लोग पढ़ ही नहीं सकते हैं.
We can study mind, but we cannot study soul. So यहाँ पे जो soul का concept था वो यहाँ पे रुक गया. इसके आगे साइकोलॉजी में सोल का कॉन्सेप्ट आप नहीं देख पाओगे. यू कैन सी देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, बट you will not see the concept of soul, because soul cannot be visualized, soul cannot be touched, soul cannot be described. Okay, soul क्या है वो हमें ही पता है. मेरे अंदर का soul क्या चाहता है वो मैं ही जान सकती हूँ. Soul is a very big concept. It is a very big than our mind. Now, if psychology is a science, it must be based on some sorts of observation and experimentation. Okay? तो हम लोग सोल के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या? Say yes or no? No, miss. No, miss. क्यों नहीं कर सकते? Why we cannot do experiment with the soul? Because miss, we can't see the soul. We can't learn the soul because नहीं, उसके लिए मुझे किसी का मर्डर करना पड़ेगा ना, तब तो उसी के सोल के साथ मैं डील कर पाऊंगी. उसके लिए मुझे पुलिस कंप्लेन होगा मेरे ऊपर, मुझे जेल जाना पड़ेगा, मुझे किसी का मर्डर करना पड़ेगा. Then only I can deal with that soul. Understood? So studying soul is not easy. Study of soul is not easy. There you have to do the murder of someone. कि मुझे तुम्हारा सोल पढ़ना है तो तुमको मरना पड़ेगा. No, it is not possible. ठीक है? So studying of soul through the observation, experimentation is not possible. But study of mind through observation and experimentation can be possible. However, neither soul or mind can be observed. We cannot see or touch them. We can't describe its nature, nor we can we say where it exists. Therefore, the definition psychology was modified. So, ये प्लेटो और जॉन लॉक के definition के बाद बहुत सारे modifications हुए. Modifications means what? Concept थोड़ा उनके concept से लिया, but उसको modify करके उसको text book में डाला. Now, study of consciousness. Please mute yourself, children. Don't unmute. Now, अब 19th century में people decided that psychology is not a philosophy, it is a science. So it was happened in which century? 19th century. 19th century. Yes. So in late 19th century, German physician and philosopher William Wundt. William Wundt is a very famous psychologist, children. Huh? William Wundt established the first psychology laboratory. पहले क्या था? साइंस का ही लेबोरेटरी होता था. But when psychology came into science subject, तो psychology के लिए भी laboratory become very important part. So first psychological laboratory at Leipzig University in 1879 to study what? To study human behavior. Okay. Now who introduced the conscious experience? William. John Locke, Plato, or William Wundt? Plato. William Wundt. Yes, William Wundt. William Wundt introduced the term conscious experience. Conscious मतलब क्या होता है? मेरी सोचने की और समझने की शक्ति एक जगह पे है. Conscious. कभी कभी हम बोलते हैं ना, यार मैंने unconsciously ये डिसीजन ले लिया कि मैं अपनी सोचने समझने की शक्ति में नहीं थी. But what is conscious? Where I can think, I can observe, I can understand, then I can experience. That is called conscious experience. Now, the term conscious experience refers to the awareness of mental activity of an organism. मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? ठीक है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? ये होता है आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस. आप जो काम पूरे ध्यान से करते हो, दैट इज द कॉन्शियस एक्सपीरियंस यू गेट. आपको वहां अभी आप लोग क्लास में बैठे हो, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ, तो वो आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस नहीं होगा साइकोलॉजी का. वो तो बस अटेंडेंस के लिए आ जाते हैं ना हम लोग, है ना.
तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस कब होगा? जब मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछूंगी और आप मुझे उसका जवाब दोगे, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये बच्चा कॉन्शियस एक्सपीरियंस कर रहा है साइकोलॉजी का क्लास. करेक्ट? Yes, miss. Okay. Now, the awareness include the stored mental impressions or representations of past, present and future. हमारे दिमाग में 3 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं. या तो हम पास्ट के बारे में सोचेंगे, या प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे, या फ्यूचर के बारे में सोचेंगे. यही 3 टाइम स्पेन होता है ना, जिसका हमारा सारा लाइफ एक्सपीरियंस इन्हीं 3 चीजों के आसपास होता है. दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ओके, so the awareness include the stored mental impression or presentation of the past, present and future. He conducted the experiment on reaction, time, perception, consciousness. After that, psychology emerged as a science. So William Wundt was the first person who started the psychological experiment. जैसे साइंस के एक्सपेरिमेंट होते हैं, वैसे ही विलियम वुंड is first German physician and philosopher who started psychological laboratory. उसने क्या किया? Psychological laboratory start किया. He was the first person. Okay, just remember the name. What is the name of that psychologist? Come on, tell me. William Wundt and his colleges. याद रहेगा? and his Which colleagues. is the Yeah, ma'am. first laboratory? In which university? Who made the first psychological laboratory? Leipzig. William Wundt. Where he made? University of Yes, Leipzig. Which year? What is the year? 1879. 9. Okay. So, but what is the mental impression stored in awareness which he had studied? Representations of past, present and future. Representation of past, present and future. Okay. And he conducted the experiment on reaction. हम किस टाइम पे क्या रिएक्शन देते हैं? परसेप्शन का मतलब होता है स्टूडेंट हमारा थिंकिंग. परसेप्शन मीन्स व्हाट? थिंकिंग. एंड कॉन्शियसनेस, हम कितने एक्टिव है, मेरा माइंड कितना एक्टिव है, दैट इज कॉन्शियसनेस. आफ्टर दैट ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन जब विलियम वुंड ने किए, आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ विलियम वुंड, साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट गॉन इन विच कैटेगरी? इन साइंस कैटेगरी. अंडरस्टूड? ये देखो, ये पिक्चर देखो, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं एंड दे स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग लाइक दैट. अब एक और हमारे पास, ये सारा आप लोग मार्किंग स्लो स्टूडेंट्स. मार्किंग स्लो. ये भी विलियम वुंड का ये जो पूरा ये जो बॉक्स है, दैट आल्सो यू हैव टू मार्क. Done? Can I go further? Yes, miss. Okay. Now, Yes, miss. Done. after William Wundt, one of the very important psychologists whose name was Dr. Sigmund Freud. He is also very famous psychology children. He is an Austrian physician, defined psychology as a study of unconsciousness. इसने क्या कहा? विलियम वुंड ने क्या कहा? स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस. सिगमंड फ्रूड ने क्या कहा? स्टडी ऑफ अनकॉन्शियसनेस. ओके. ही बिलीव दैट मोस्ट ऑफ आवर मोटिव्स आर हिडन. हमारे जो भी मोटिव्स होते हैं लाइफ में वो हिडन होते हैं, हम उसको सबके सामने नहीं कहते हैं. ओके. देयर इज एन अनकॉन्शियस लेवल ऑफ आवर माइंड वेयर वी पुश और रिप्रेस ऑल आवर थ्रेटनिंग अर्जेस एंड डिजायर्स. हमारे दिमाग में एक ऐसा कोना होता है जो हमारे ऐसे नेचर को दबा के रखता है कि अगर वो नेचर बाहर आ गया तो सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी. ओके. सो दैट इज द अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड वेयर वी पुश आवर ऑल नेगेटिव पॉइंट्स इन दैट कॉर्नर ऑफ अ माइंड. ओके.
आपने देखा होगा ना कभी कभी कुछ ह्यूमन बींग एनिमल्स के जैसा बिहेव करते हैं दूसरों के साथ। यस, तो ये क्या है, ये उनके अंदर का थ्रेटनिंग डिजायर्स है, डर है वो उनके अंदर का कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ये मेरे साथ ऐसा करेगा। ओके, ही स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, बिलीव दैट पर्सनालिटी इज फॉर्म्ड इन फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ। 1 से लेके 5 साल तक के बच्चे का जो एक्सपीरियंस होता है अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, it is very important to form a personality of a child in teenage, in adulthood, in future। अगर उस बच्चे के साथ इस 5 साल में कुछ भी गलत हुआ तो वो बच्चे का एक हेल्दी पर्सनालिटी you cannot expect in future। Okay, understood till here? Yes, miss. Miss, understood. एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, मतलब कोई बीमारी हो गई, हाँ कोई बीमारी हो गई। Okay, now study of behavior. Till now we have studied why psychology पहले philosophy में क्यों था, फिर ये साइंस में क्यों आया, who started the psychology, Plato and John Locke, then William Wood came in a picture with the consciousness concept, then Sigmund Freud came in a picture with unconsciousness concept। Yes, now we will study of behavior, the study of behavior and mental process। William Wood defined the psychology as a study of consciousness, Sigmund Freud study as a study of unconsciousness। ठीक है, remember this, can come in the match the column। William Wood study of consciousness, Sigmund Freud study of unconsciousness। now अब एक और हमारे पास साइकोलॉजिस्ट आए whose name was John Watson। इन दोनों के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद another psychologist came in a picture whose name was John Watson। now John Watson redefined psychology। उन्होंने साइकोलॉजी को फिर से डिफाइंड किया, and what he said, psychology is a science of human behavior। अब तक क्या हो रहा था, साइकोलॉजी तो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। किसने कहा, विलियम वुड ने कहा। सिगमंड फ्रूड ने क्या कहा, नहीं ये कॉन्शियसनेस का स्टडी नहीं है, दिस इज द स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस। अब जॉन वॉटसन जो बाद में आए उन्होंने क्या कहा, ना these both people are wrong। psychology is a science of human behavior। who said this? Who said this? John B. Watson. Yes। अब हम लोग जॉन वॉटसन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। इन जनरल वी कैन से, मैं पढ़ते पढ़ते थक गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एग्जाम देना है, आप लोग को नहीं देना है। हु इज गोइंग टू स्टडी? मैम मैं रीड करूं? कम ऑन हिमांशी, रीड बिहेवियर। चलो। In general we can say that मैम आपने किसको बोला रीड करने? हिमांशी को बोला। Yeah ma'am, I am going to। In general, we can say that behavior is an organism's response to various stimuli present in our surrounding, but each individual might have different response to the same stimulus because of their interest, personality, and attitude. Attitude, Himanshi. Yes, ma'am. Himanshi, wait. Now, साइकोलॉजी इज व्हाट, अब यहाँ पर जॉन वॉटसन ने क्या कहा, साइकोलॉजी एक विज्ञान है जो इंसानों के व्यवहार को समझ सकता है। ठीक है, किसने कहा ये? जॉन वॉटसन ने कहा। मैं हिंदी में क्लियरली बता रही हूँ ना। बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर इज अ वेरी वास्ट टर्म। हम कहते हैं ना यार उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो जब मैंने कह दिया कि उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है तो ऑटोमेटिकली उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी हो जाती है हमारे नजर में। एम आई करेक्ट? अब मैं बोलूंगी अरे उसका बहुत रूड बिहेवियर है तो उसकी पर्सनालिटी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव पर्सनालिटी। एम आई करेक्ट? Yes, miss. सो बिहेवियर इज अ बिग टर्म
to understand the human? Yes, miss. Yes, ma'am. Now, stimulus क्या होता है? What is stimuli? Stimuli means a different situation. अभी आपके सामने एक सिचुएशन आ जाए, आप रोड पे जा रहे हो, कोई आपको थप्पड़ मार के चला जाए, तो आप क्या रिएक्ट करोगे? आपको गुस्सा आएगा, आप वापस उसको थप्पड़ मारने जाओगे? यस, आप वापस उसके पीछे क्या जाओगे? थप्पड़ मारने जाओगे, उसने मुझे क्यों मारा? या फिर आप पुलिस स्टेशन जाओगे, या फिर आप अपने फैमिली के पास जाओगे उसकी कंप्लेंट करने, या पुलिस स्टेशन जाओगे कंप्लेंट करने? यस, तो यहाँ पर हाँ फैमिली के पास जाएंगे, कोई पुलिस स्टेशन जाएगा, कोई खुद ही बहुत मारेगा उसको। यस, तो स्टिमुली एक ही है, थप्पड़ मारना, पर 3 लोग इस सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. यहाँ पर ये जो स्टिमुली से हम रिस्पॉन्स देते हैं उस स्टिमुली को, दैट इज डिपेंड ऑन आवर इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट क्या है? अगर मैं भी झगड़ालू हूँ तो मैं उसको दौड़ा दौड़ा के मारूंगी, मैं उसको बहुत मारूंगी, ठीक है। बट अगर मेरी पर्सनैलिटी शांत टाइप है तो मैं घर पे जाके बोलूंगी सबको कि इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। अगर आई हैव एन एटीट्यूड, आई विल गो टू द पुलिस स्टेशन एंड शो माय एटीट्यूड कि भाई इसने ऐसा किया, इसके ऊपर केस करना है। सो ये तीनों चीजें, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और एटीट्यूड, decides my behavior towards the particular stimuli. Stimuli means situation. Okay. Now, Nidhi Gangar. Nidhi. Yes, ma'am. Nidhi, read the second paragraph. Behavior is either over. How to pronounce it? Overt and covert. Overt and covert. Overt behavior includes direct observable response like walking, talking, and dancing, etc. Covert behavior includes the responses which are not directly observable, but can be inferred from the behavior like thinking, feeling, etc. Okay. Now, overt behavior जो मैं directly देख सकती हूँ, सबका चलना फिरना, बात करना, डांस करना, खाना खाना, सोना उठना बैठना, ये सब क्या है? overt behavior है जो मैं directly observe कर सकती हूँ, ठीक है। सो बिहेवियर कैन बी 2 टाइप्स, एक तो डायरेक्टली ऑब्जर्व हो सकता है एंड दूसरा डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो सकता। वो कौन सा है? मेरा थिंकिंग, मेरा रिस्पॉन्स, मेरी फीलिंग्स, यस, उसको क्या कहेंगे? कोवर्ट बिहेवियर। जस्ट मार्क दिस होल पैराग्राफ। मार्क किया बच्चा? Yes, ma'am. Okay. Now, mental processes. In psychology, we study the external as well as the internal factors of behavior. हम external भी पढ़ते हैं, internal behavior भी पढ़ते हैं. External means what? मैं दूसरों के साथ कैसा behave कर रही हूँ, and internal means what? मैं अपने साथ कैसा behave कर रही हूँ, मैं अपने लिए क्या सोच रही हूँ, अंदर मेरे दिमाग के क्या चल रहा है. Here we study the mental processes of an individual. It includes the thinking, memory, forgetting, emotion, motivation, attention and perception. Please ये पूरा mark करो आप लोग. Yes. Mark full. Now scientific mentor. Mansi is there in the class. Mansi 11C. Yes, ma'am. Mansi, read the scientific method. Experiment means an individual objective observation in controlled conditions. Here, a researcher or experimenter can test his assumptions by observing and collecting the data from simple population. These observations can be generalized for analyzing and predicting human behavior. Yes. मैं क्या किया मैं एक स्कूल में गई, मेरे पास वहां पे 6 स्टैंडर्ड की 4 डिविजन्स हैं, 7 स्टैंडर्ड के 4 डिवीजन है, 8 स्टैंडर्ड के 4 डिवीजन है. मैं हर एक क्लास के एक डिवीजन में गई और मैंने ऑब्जर्व किया कि 6 स्टैंडर्ड के बच्चे चॉकलेट्स देख के ज्यादा खुश होते हैं एज कंपेयर टू 9th और 10th के बच्चे. यस, तो व्हाट आई विल ऑब्जर्व, आई विल राइट अ डेटा. ठीक है, सो मुझे ये डेटा कैसे मिला? थ्रू द ऑब्जर्वेशन, थ्रू द जर्नलाइजेशन, थ्रू द एनालाइजेशन. ओके, और मैंने उसका क्या किया, फिर मैंने उसका प्रेडिक्शन किया. क्या किया? प्रेडिक्शन. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट?
This is called scientific method. Scientific method. Yes. Now SOR model, very important. Who will read? Ma'am, can I read? Can I मत करो, मेरे स्कूल के बच्चे can I करते हैं. Wait. अनुष्का चौहान. Anushka. Are you sleeping, Anushka, in the class? Not replying. Anushka. Ritesh. Miss, can I? Ritesh, are you there? Okay, Rinky. Come on, Rinky. Yes, ma'am. SOR model. SOR model. John Watson defined behavior as anything a person or animal does that can be observed, recorded, and studied. Behavior is an organism's response to an external or internal stimulus. This fact is represented by the symbol SOR, where S stands for stimulus, O stands for organism, and R stands for response, which is reaction of the organism to the stimulus. Okay, very nicely read. Okay, SOR क्या है? SOR stimuli है. Stimuli means what? Situation. वही जो मैंने अभी आपको situation बताया. थप्पड़ मारना. Yes, miss. Who is the organism? Organism is Rinky. Rinky को थप्पड़ पड़ गया. ठीक है? फिर Rinky क्या करेगी? Rinky will cry. Rinky will go to the police station or Rinky will go to the family. हाँ. तो रिंकी का क्या आया? वो रिस्पॉन्स आया. Response. अंडरस्टूड? Yes, Yes, miss. ma'am. Stimulus. S stand for stimulus. O stand for organism. Organism means particular individual. एक पर्टिकुलर इंसान जो उस सिचुएशन में रिएक्ट कर रहा है, उसको क्या टर्म दिया है साइकोलॉजिस्ट ने? ऑर्गेनिज्म. एंड R stands for response. Response. मैंने कैसा बिहेव किया? That is comes under the response. Now, अभी examples Arjun Nair will read. Example Arjun Nair. Arjun Nair. Okay, Sania Ansari. Yes, miss. Stimuli is same, but individual response are different. Yes. Stimulus. Listen carefully. Stimulus एक ही है, सिचुएशन एक ही है, पर उस सिचुएशन में सलोनी का रिस्पॉन्स अलग होगा, फरहान का रिस्पॉन्स अलग होगा, अनुजा का रिस्पॉन्स विल बी डिफरेंट. सिचुएशन क्या है? सिचुएशन वही थप्पड़ खाना है. ओके, चलो. Yes, ma'am. Stimuli, organism, response. Stimuli. Teachers ask some questions in the classroom. Organism. Rohan, Sanika, Sachin, Surabh. Response. Give answer, remain silent, ignores, tries to recollect answers in his mind. Yes. अभी रोहन ने क्या किया? रोहन ने फटाक से आंसर दे दिया. सनिका ने क्या किया? उसको आंसर आता भी है तो भी वो चुप थी. सचिन तो एकदम एरोगेंट बिहेव किया, उसने इग्नोर ही कर दिया टीचर को. और सौरभ ने क्या किया? सौरभ को वो याद करने की कोशिश कर रहा है. तो स्टिमुलस क्या है? आस्किंग अ क्वेश्चन बाय टीचर. Organism we have a 4. Rohan, Sanika, Sachin and Saurabh. And response are also 4. Different 4 responses. Gives answer, remains silent, ignores and tries to recollect. Okay? Yes, miss. Yes, ma'am. So understood? समझ में आया सबको? Yes. Yes. Understood. समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, miss. Yes. Yes, miss. हाँ मिस समझ आया. अभी फरहान रीड करेगा नेक्स्ट पैराग्राफ. फरहान रीड करो. Yes, miss. Stimulus is an physical event or condition that gives rise to a reaction. Stimulus can be external. फरहान मुझे एक एग्जांपल दो स्टिमुलस का. जैसे मैंने अभी एक थप्पड़ वाला एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल ये टीचर आस्किंग अ क्वेश्चन हुआ, अब एक एग्जांपल आप अपनी तरफ से दो स्टिमुलस का. Okay, miss. I am trying.
Stimulus. Others, please mute yourself. हाँ बोलो बोलो. Farhan. Yes, teacher. Stimulus about stimulus gives answer. Can I get? हाँ चलो नेक्स्ट. फरहान आप थोड़ा रिकॉल करते रहो. चलो किसने बोला? मैम मैंने बोला you're walking in a jungle और सामने चलेगा. आप अपना नाम बोलिए बेटा. वृद्धि. श्रुति. चलो बोलो रिद्धि. you're walking in a jungle और सामने से शेर आ जाता. हाँ ये था स्टिमुलस. ठीक है ये स्टिमुलस था. अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कौन है? आप हो कि कोई और है? मैं हूँ क्योंकि मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ. तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो. सो आपका रिस्पॉन्स क्या है यहाँ पर? either run और climb a tree बाजू में. ओके वेरी गुड वेरी गुड. नाउ सेम क्वेश्चन. अभी आप फरहान दे सकते हैं आंसर? आपने रिकॉल किया होगा. मिस कह रहा है क्लास कर रहा है क्लास. फरहान. फरहान मीन्स फरहान. फरहान चलो दो आंसर. फरहान घर आऊं क्या आपका आंसर लेने? चलो मे आई कौन? मिस कहना है नाम बोलो बेटा. मिस सानिया. सानिया. ओके चलो बोलो सानिया बोलो. Miss, when we saw our result, we get nervous, we react highly. ओके मैम क्या? ठीक है चलो सबको समझ में आ गया. स्टिमुलस क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है. यस मिस आ गया समझ. अब हम लोग आगे चलते हैं. Yes. Okay. Walking, playing, dancing, singing, fighting, many others things we can observe directly. Okay. ये सारी चीजें हम directly observe कर सकते हैं. Okay. Covert activities include what? Mental processes. मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या याद कर रही हूँ, मैं क्या भूल रही हूँ, ये मैं डायरेक्टली ऑब्जर्व देख सकती हूँ क्या? नहीं. ये मैं सिर्फ अपने दिमाग में रखती हूँ. Yes. Which can't be observed directly. These mental processes can be measured through how people react to different problems and situations in their lives. Now, study of cognition. Gaurav Thakur, are you there in the class? Gaurav Thakur. Gaurav Thakur. Not replying. Ritesh. Ritesh. Okay, Jeevika. Jeevika. Yes, ma'am. Jeevika, read the study of cognition. Come on. Read karo. During 1950s and 1960s, focus of psychology shifted from behavior to cognitive process. Psychologists were interested in studying process like prescription, thinking, memory, or other higher order activities. Psychologists are interested in studying inner process that trigger particular response to the stimuli. Okay. So study of cognition. During 1950-1960, focus of psychology shifted from behavior to cognition process. Cognition process कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. Cognition process means what is going on in my brain, what is going on in my mind. That is the cognition process. And psychologists were interested in studying the process like perception, thinking, memory, and other higher orders activity. Cognition psychologists are interested in studying inner processes that triggers particular response to the stimulus. अब मेरी thinking, मेरी memory, यही सारी चीजें मुझे pressure करती है किस चीज के लिए? एक particular way में behave कर. Study of cognition. Students, please mute yourself. Okay, mark your study of cognition. Yes, miss. Okay. Now the professional development of psychology in India
ये पूरा टेबल नंबर 1 you have to study all these dates. For example, ये आपको पढ़ना है. Ma'am, we have to memorize this. Yes, dates आपको memorize कर. Sorry, year. You have to memorize year. And one more, very important. ये जो NAOP है, National Academy of Psychology. I will give the term NAOP. You should be able to write down the National Academy of Psychology. आपको full form आपको learn करना है. ठीक है? Okay, ma'am. So year and full form. Okay. आगे. अब इसमें क्या है 1960. Who will read this? Ready me? Miss me. Miss, can I? बोलो बेटा. Miss, can I? Can I Miss, नहीं? can I? Miss Can I? Sonia. सोनिया. चलो सोनिया. Yes, Miss. 1960. First psychology department was established in Calcutta University by Professor Narendranath Sen Gupta. Okay. Next. 1925. Indian Psychological Association IPA was established and launched the Indian Journal of Psychology. Next. 1940. Lumbini Park Mental Hospital was found in Kolkata. 1945 to 1949. Psychology Wing of Defense Research was established. It is part of Defense Science of Organization of India. 1955. National Institute of Mental Health and Neuroscience NIMHANS was established in Bangalore. 1962. Indian Academy of Applied Psychology IAAP was established. 1962. Establishment of Hospital for Mental Disease at Ranchi. 1968. The Indian Association of Clinical Psychology was formed. 1989. National Academy of Psychology NAOP was formed. Did. Okay. So this you all have to learn. Okay. Yes, Miss. Okay, Yes, Miss. okay. Okay. Yes, As miss. I'm just giving you 5 minutes to study this chapter from starting and ask any question if you have. Come on. Then I will start with the Indian perspective. Okay. Do it fast. 5 minutes है आपके पास. You have 5 minutes.
हेलो मैम। मैम एक डाउट। Yes, tell me. मैम ये जो सिंबल के नीचे एक पैराग्राफ है ना, उसके नीचे वाला बोथ सोल एंड माइंड्स आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मतलब दोनों को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है? या ओके। Ma'am, what does innate mean? What? Miss perception meaning? Innate. देखो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? किसने पूछा था एब्स्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन? व्हाट इज योर नेम बेटा? Who asked the question of abstract? मैम माई सेल्फ रावत हिमांशी। रावत हिमांशी। हिमांशी, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग ओनली एज एन आइडिया, वो मेरे दिमाग में ही है एज अ आइडिया। जब मैं कोई आइडिया सोचती हूँ तो क्या होता है, मेरे दिमाग में ही होता है ना? यस? हाँ। वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। जो चीज फिजिकल फॉर्म में नहीं है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। गेटिंग माय पॉइंट? हिमांशी, अंडरस्टूड? हाँ मैम समझे। Okay. Now, what is the next question? Ma'am, what बस does मैम एक ही। innate mean? किसका? Innate. Yes, ma'am. What is the meaning of innate? One second. Perception meaning? One second. Where is innate? Innate means children ability to learn. Innate means what? Ability to learn. Now the next question. Perception. What? Perception. 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 Yes, miss. Perception. Perception or perception? It's perception, beta. It's perception. Yes, perception. Perceptions means ability to understand something in our way. Okay, ma'am. As a teacher, मेरा perception अलग होगा. As a student, आपका perception अलग होगा किसी भी चीज को लेकर. So ability to understand something, that is called perception. Okay? Yes, ma'am. Anyone else? ये SOR का पूरा आप लोग मार्क कर लेना. SOR. Is what is meant by behavior to cognitive process. What? Behavior to cognitive processes. Where is it? Where is it, beta? Page number 5. Study of cognition. What cognitive? Yes, miss. So you want to know the meaning of cognitive? Yes, miss. Cognitive means children, which is connected with the process of understanding. ठीक है? जो चीज मैं समझ रही हूँ धीरे धीरे, that is called cognitive process. Connected with the process of understanding. Okay? Okay, miss. Thank you. Next, anyone else? Anything else? Can we go further now? Miss, how many chapter will come in exam? अरे मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, only first chapter will come. Only first chapter. This one, which I am just Thank teaching you. Okay? Now, ancient thinker. Now, अब हम लोग को साइकोलॉजी किसके पर्सपेक्टिव से देखना है? इंडियन पर्सपेक्टिव से. Now, many ancient Indian thinkers. Who are these thinkers? Indian They tried what? They tried to solve the mystery of human minds. What they tried? They tried to solve the mystery of human minds. Many ancient Indian thinkers tried to solve the mystery of human minds during the period of 2000 BC to 500 AC. But they were what? They were philosophers. हमारे इंडियन में साइकोलॉजिस्ट को क्या कंसीडर किया जाता था? फिलोसोफर. Yes. So
philosopher, one second. Anyone want to read this? Miss, can I Yes, read? ma'am. Can drink. Can I नहीं? Ridhima, चलो Ridhima read करो चलो. Yes, miss. Many ancient Indian thinkers tried to solve the mystery of human थोड़ा mind. loudly बेटा, loudly. During the period of 2000 BC to 500 AC, philosophers studied mind and human behavior from different perspectives and tried to explain ideas like soul, mind, intuition, and so on. All this was a part of philosophy. Upanishads explain the self and personality structure with the help of One second. concept. अब just now यहाँ पर एक explanation था उपनिषद. हमारे यहाँ पे वेद है, पुराण है और उपनिषद है. वेद, पुराण and उपनिषद. So Upanishad is what? It explains the self and personality and structure with help the concept of kosha. Something similar to cover. Okay. So if आपको सिर्फ इतना ही learn करना है. Upanishad is what? It explains what? Self and personality. Mark करो इसको. Yes, miss. Read further. Upanishads explain the self and personality structure with the help of concept called kosha, something similar to kava. These are Anamaya kosha, Pranmaya kosha, Manomaya kosha, Vidnyan kosha, and Ananya kosha. They also talked about factors that affected these koshas and also how these koshas determine human behavior. According to Ayurveda, there are 3 types of dosas, which are So ये koshas के names आपको याद रखने हैं. Just learn these names. Okay. Now, they also talked about the factor affected these koshas and also how these koshas determines human behavior. So these koshas are not a very small thing. These koshas affects our behavior. Okay. Now I want somebody else to read. Ma'am, can Rinky read? Ma'am, married. Rinky. Priya, can you read? मेरे को नहीं प्रिया को नहीं आता रीड करने बेटा. पलक Ma'am, मैं read करूँ? कौन रीड करना चाहता है? सानिका. चलो सानिका. सानिका. Yes, miss. रीड करो बेटा. चलो. According to Ayurveda, there are 3 types of doshas, which are kapha, vata, and pitta. And these doshas determine prakruti, characteristics of human beings. For example, individuals who have kapha as a dominant doshas are calm, flexible, patient, and caring. They have strong memory. It is said that they take longer to grasp a subject, but once they understand it, they are able to retain it for a longer time. Individuals who have vata as a dominant doshas are unpredictable. Their moods are and thoughts fluctuate. They get angry very quickly, but they also calm down very fast. They are art lovers. Individuals who have pitta as a dominant doshas are believed to be very sharp. They are known as short-tempered. Okay. Okay. So what you understood? Pratik Rawal, can you tell me? No. Pratik Rawal. हाँ प्रतीक रावल, आपको क्या समझ में आया with this doshas? प्रतीक अपना हेड स्क्रैच कर रहा है. क्या हो गया प्रतीक? So there According to Ayurveda, there are 3 types. 3 types. Dosa, Vita, Pitta, and these dosa determine prakruti. Characteristics of kapha as a dominant dosa are calm, flexible, patient, and carrying their strong memory. It said they take longer to grasp of a subject, but they understand it. They are able to retain it for a longer time. Individuals who have vastas as a determined dosa.
Vat. What as a determined doshas are unpredictable. Their moods and thoughts fluctuate. They get angry very quickly, but they are also calm down very fast. They are art lovers individuals. You have Pitta as a dominant dosha, are believed to be a very sharp. They are known to be short tempered. Okay. Now, क्या नाम है बेटा आपका? प्रतीक. Yes, miss. हाँ प्रतीक, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? कफ, वात एंड पित्त, कौन सी कैटेगरी में हो आप? बताओ. इन विच कैटेगरी आप लोग अपने आप को किस कैटेगरी में डालते हो? जस्ट राइट डाउन इन चैट बॉक्स. कम ऑन. कफ, वात, पित्त. कम ऑन. किस कैटेगरी में हैं आप लोग? राइट डाउन इन चैट बॉक्स. Miss, chat is disabled. Pitta. नहीं लिख सकते, अभी तो लिखा है आपने. मिस मुझे एक बार और समझाओ ना, समझ में नहीं. हिमांशी देखो, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा 3 दोषास होते हैं हमारे उपनिषद में. आयुर्वेदा के हिसाब से 3 दोष बताए गए हैं इन ह्यूमन बॉडी. दैट इज द कफ. सो जिनका कफ ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, जिनको कफ का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, सो वो काम डाउन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, पेशेंट होते हैं, केयरिंग होते हैं और उनकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है. एंड दे हैव अ लॉन्गर टाइम टू ग्रास्प डिटेक्ट, मतलब उनको कोई चीज समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है. ओके. एंड इंडिविजुअल हु हैव मोर डोमिनेटेड इन वात दोषा, जिनको वात दोषा ज्यादा होता है, वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं. मतलब वो कैसा बिहेव करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा. मूड का प्रॉब्लम होगा, थॉट्स फ्लक्चुएट होगा, वो बहुत जल्दी गुस्सा होंगे, बहुत जल्दी काम डाउन हो जाएंगे. एंड द पर्सन हु हैव अ पित्त डोमिनेटिंग नेचर, पित्त डोमिनेटिंग दोषा, they believe to be very short, but they are very short tempered. Okay, so these are the 3 doshas which is given in Indian. ये जो साइकोलॉजी को इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक्सप्लेन किया है ह्यूमन बॉडी को. ठीक है, समझ में आया? Yes, miss. ना Miss, child is disabled. Ayush Pandey. Okay, Dhwani, just read the next. Yes, ma'am. ये read करो. Besides doshas, there is another concept to explain human temperament called guna, namely sattva guna, rajas guna, tamas guna. Human body is भी हमने क्या पढ़ा? हमने दोषास पढ़े. दोष मतलब दोष, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई डोंट नो. सो हमने दोषास पढ़े. अब हम गुण पढ़ रहे हैं, गुण. So according to Indian perspective, we have a sattva गुण, rajas गुण, tamas गुण, 3 गुण. Okay, हमारे दोषास कितने हैं? 3. कफ, वात, पित्त. हमारे गुणास कितने हैं? 3. रजस, तमस. अभी का अभी इसको लर्न करो फॉर एग्जाम. Understood till here? Yes. Yes, miss. Now, Jyoti Singh, are you there in the class? Jyoti Singh? Yes, miss. हाँ, ज्योति read करो. Next, people who have tamas quality. Can I? ज्योति reading ना बेटा, read करो ज्योति. Yes, miss. ज्योति इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा? Miss, can I read Ansari Sani? हाँ चलो अंसारी, चलो पढ़ो. Have tamasalic qualities are idle and sluggish. They do not work hard. They seems to be a depressed Rajasai. People are arostotic.
Their self-estimate is very strong. They think that everything should happen according to their own wish. They are brilliant people. Those who have Satyavaguna are calm and calm and understanding. They do not dare carefully and profitably. They are aware of reality. Therefore, they behave calmly. Okay. Now, tamas quality जिसके पास होती है, they are very sluggish. They don't work hard. उनके अंदर आलस रहेगा, डिप्रेस रहेगा, ठीक है? और रजस आर वेरी एरिस्टिकेट, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत है. और उनके अंदर क्या नेचर होगा कि जो भी चीज हो मेरे अकॉर्डिंग हो और मेरी इच्छा से ही हो. बट जिनके पास सत्व गुण होता है, सत्व गुण मतलब सच्चा गुण, दे आर वेरी काम एंड अंडरस्टैंडिंग एंड दे डू देयर वर्क वेरी केयरफुली. बहुत ही ईमानदारी से वो अपना काम करते, ठीक है? So I am going to ask you the qualities of this guna in exam. Now, next paragraph, who will read? रिंकी बहुत. रिंकी कितनी बार पढ़ोगे? फातिमा अंसारी. फातिमा अंसारी. मिस कहना है? कहना ही नहीं, ये फातिमा क्यों नहीं रिप्लाई कर रही है? Fatima, should I remove you from this class? No, miss. Then reply when teacher is asking something. Read करो चलो. Okay, miss. Miss, which paragraph? हाँ, आपको ये भी नहीं पता कहाँ से read करना है. In 5th century BC. Don't have book. You don't have text In book. 5th century. Share screen किया है ना बेटा? Share screen से पढ़ो. Yes, miss. In 5th century BC, Patanjali explained deep thought about psychology in Yogasura. He was the yogi having a great scientist vision. He studies level of human consciousness and also proposed ways to evolve spiritually. His theory is Ashtanga Yoga is useful today also. 8th aspect of Ashtanga Yoga are यामा नियमा आसना प्राणायाम और यमा नियमा प्राणायाम प्रतिहार धारणा ध्यान और समाधि, ये सारे आपको लर्न करने हैं. ये पूरा ये जो पैराग्राफ है एस्पेक्ट ऑफ अष्टांग योगा, ये सारे नाम आपको लर्न करने हैं. समाधि, ध्यान, धारणा, प्रतिहार, प्राणायाम, आसना, नियमा, यमा. ये किसने दिया है? Who given this concept? This is given by Patanjali. Okay. Now next aspect. अब कौन पढ़ेगा? मिस कशिश. मिस कहना है आयुषी शाहानी. Okay, आयुषी चलो start करो read. It also helps us to control our wishes and desires. Many Indian saints and philosophers has made many comments about mind or human behavior. Jain, Sri Thankar, Sant Kabir, Samrat Ramdas, Swami Vivekanand, etc. highlighted various aspects of human mind and behavior. It reflects their understanding of human nature. Okay. So, Sant Kabir, Jain Tirthankar, Samarth Ramadas, Swami Vivekanand, etc. highlighted various aspects of human mind and behavior. Okay, so these were the very big people. जो psychologists तो नहीं थे, but in our Indian society they are one of the respected people who always studied the human behavior. Huh? Now, goals of psychology. Who will read? Miss Mary. हाँ read करो चलो. Read fast. नीचे prediction वाला. हाँ. 4 goals of psychology. Describe, explain, predict, control. So ये psychology के 4 goals हैं. Describe क्या करना है, explain क्या करना है, predict क्या करना है और control क्या करना है. These are the 4 goals of. Now describe what is happening. Come on, start reading.
Describe what is happening. The primary goal of psychology is to identify and classify behaviors and mental processes as accurately as possible. How do individuals think? What factors are responsible to stimulate their behavior? How do individuals react to their behaviors? No. How do individuals react to a specific situation? To know this answer, research need to record a particular behavior in the socio-economic, cultural, graphical space. For example, people behave differently in formal and informal situation, and their reaction are studied in physiology, are studied in psychology. For this purpose, researchers use various physiological tools, for example, standardized psychology test, psychology and analytical techniques, survey method, laboratory experiments, and observations. Okay. So what is happening? Describe what is the primary goal? To identify and classify behavior, mental processes accurately. जितना accurate हो सके उसको उतना accurate we have to study. Then what? Huh? What factors are responsible to stimulate their behavior? ये आप लोगों को खुद पढ़ना है. Now, who will read the next one? Why it is happening? Richa, Salia. Can I read? Second major goal of psychology is to understand the causes of the observed responses by explaining the facts in a meaningful way. Psychologists are interested in knowing the reasons behind their reactions. They use standardized psychological tests to understand the causes of their behavior. If a particular behavior is observed only in one individual, it cannot be generalized to entire population. Whereas if it is observed in most of the people, then we can generalize it to entire population. For example, accidents of bike riders are more fatal due to head injury. Therefore, wearing helmet should be made compulsory for bike riding. Prediction. What will happen next? Third major goal of psychology is to predict how a given condition or set of conditions will affect or lead to a particular behavior and mental processes of individuals. अबे पूजा मीटिंग बंद. Read. Prediction involves knowledge about the possible outcomes of behavior. Example, if someone drinks alcohol, it will slow down his reactions and that will increase possibility of an accident. So driving after consuming alcohol should be strictly avoided. Control, how can it be changed? Control or modification of behavior is the fourth goal of psychology. Controlling behavior means shaping or molding behavior in a particular direction. It is accomplished when the researcher uses various principles of psychology to bring successful and smooth changes in behavior so that unwanted behavior patterns can be avoided. Psychologists use various psychotherapeutic techniques to shape and modify human behavior. For example, if some students remain absent in the school or do not study, then school psychologists can help them to find out and can help them to find out the causes and modify their behavior. For this purpose, they may organize some intervention programs in school. School counselors can study psychological problems of students and help them with proper guidance and counseling. Stress due to bullying, parental expectations, unhealthy competition, etc. Counselor can help these students by making them accept the reasons behind it so that they can modify their behavior wherever necessary. Summary. Psychology has evolved from the quest of man to understand behavior, from perceiving as a study of soul, mind, consciousness to behavior and mental process. It has been still exploring the behavior aspects of man. It was only in 1879 when Wilhelm Wundt established the first psychology laboratory in Leipzig that it was known to be an independent science. We saw in this chapter that how in India too the study of human behavior has been reflected in our Ayurveda and Patanjali Yoga Sutra.
The important goals of psychology are description, explanation, prediction, and control. Okay, so these are not much important. Okay, जो भी important था markings में आप लोग को दे चुकी हूँ. Just concentrate on this marking. मैं starting से फिर से एक बार marking आप लोग को दिखा देती हूँ. Just mark it, and whatever questions are going to be asked, that is in between markings only. The question paper will be for 25 marks. Okay, 25 marks. Question Google form में रहेगा बेटा. It will be in Google form. आप लोग को options दिए रहेंगे. You all have to just select the options. Is that clear? So only one chapter is going to come for the unit test. You have to study all the yellow part. Okay, miss. Okay, miss. ये पतंजलि वाला भी आप लोग मार्क करो. ठीक है. I hope you all get the markings. Yes, miss. हाँ, Yes, key miss. psychologist. ये Yes, psychologist के नाम. The remember the name of the psychologist, the year, and in which area they worked. Key psychologist. Okay, ये आपको learn करना है. John Locke, Plato, William Wundt, Sigmund Freud, John Watson. Okay, बाकी exercise you all have to do it your own. Okay. Okay, ma'am. Yes. इसमें से आपको सारे पढ़ने हैं. True and false. Match the column, fill in the blanks. Find odd man out. Okay. Okay, ma'am. Okay. Now I'm giving you more 5 minutes. आप लोगों को कोई question हो तो पूछ सकते हैं. ठीक है. उसके बाद मैं ये session finish करूंगी. मैम हम लोग को नोट्स बनाना जरूरी है. That is up to you बेटा. नोट्स की तो जरूरत नहीं है because आपको टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है. हाँ ठीक है मैम. ओके. मैम ये गोल्स और साइकोलॉजी में कोई मार्किंग नहीं है? नहीं. ये आप ऐसे ही जस्ट रीड कर लो बेटा. Just read that. Okay. मार्किंग के अलावा भी हमें बाकी की चीजें पढ़नी है क्या? इसके अलावा बाकी की चीजें क्या, मैं समझी नहीं. मीन्स अगर कोई चीज है जो आपने येलो मार्क नहीं करवाया तो वो भी पढ़ना है क्या? That is up to you, but ये येलो मार्क तो पढ़ना ही है. ठीक है. पढ़ना पूरा ही है, but येलो मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. समरी भी एक बार देख लो. समरी तो पूरे चैप्टर्स का ही होता है. So in exam only yellow mark things will be asked, right? Yes. Miss, only MCQs and objectives will come, or we have to write only briefs MCQs and objectives. Okay. Yes, ma'am. Yes, miss. Ma'am. Studying psychology is a very new subject for you all. So that is the reason I have taken only chapter 1 that you all can study. ठीक है. मैं 3 chapters ले लेती, so that will be load only. That is the reason I have taken only 1 chapter. That is also the very easy chapter. Okay. Ma'am. So any question, any other question related to the chapter? This is the No, first miss. and मैम last. टेक्स्ट बुक का नाम बताओ ना. टेक्स्ट बुक का नाम बताओ. टेक्स्ट बुक का नाम. मिस पेपर एमसीक्यू में होगा? हाँ जी, एमसीक्यू में होगा. ये है आपका टेक्स्ट बुक का नाम. 11th स्टैंडर्ड साइकोलॉजी. ओके मैम. Yes, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो दीक्षा ऐप से. मैम शो द कवर पेज प्लीज. साइकोलॉजी का. This is the cover page. Okay. Okay, thank you. Yes, miss. This is the cover अगर page. रिटन एग्जाम हो तो कितने मार्क्स? आवाज नहीं आ रही है मुझे.
हाँ मैम, अगर रिटर्न मार्क्स, ये रिटर्न एग्जाम हो तो कितने मार्क्स का होगा साइकोलॉजी? अगर रिटर्न मार्क्स का भी हुआ, अभी तो रिटर्न मार्क्स का मेरे पास रिटर्न पेपर का कोई ऑब्जर्वेशन आया नहीं है, मुझे बस बोला गया है कि ऑनलाइन ही एग्जाम होगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। ओके सो मैम, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ऑनलाइन 25 मार्क्स। ओके, मिस रिटन एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट्स कितने मार्क्स के आएंगे? क्या? रिटन एग्जाम में कॉन्सेप्ट्स कितने मार्क्स के आएंगे? रिटर्न एग्जाम तो हो ही नहीं रहा है ना अभी, अभी तो ऑनलाइन हो रहा है बच्चा। नो मिस, ऐसे जनरली पूछ रही थी। जनरली अभी बेटा क्या है ना, अभी सिलेबस कम किया है, तो रिटर्न एग्जाम कितने मार्क्स का होगा स्टिल नॉट क्लियर। ओके, अगर हुआ देन आई लेट यू नो। ओके, थैंक यू मिस। ओके मिस, थैंक यू। Thank you, miss. Bye, miss. चलो, can we stop the session now? Yes, miss. Okay, one second, don't leave the class, don't leave the class, let me take attendance. Okay, miss. Now you all can leave. Thank you so much. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, bye. Bye, bye everybody. Thank you, ma'am. Ma'am. Yes. Any question?